So, hey guys, and welcome back to the Classic Affair. Well, we all are inside our houses and we all are locked down. And probably अब तक हम सब लोग Netflix देख के बहुत बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं. And you guys, this is one of the reasons why the traffic on the online dating websites has been increasing. Yes, and ये मैं नहीं कह रहा हूँ. The reports are saying this thing. So, to all the singles out there, guys, if you are looking out for a date for yourself, this is the perfect opportunity or the perfect news for you all. Now, to all my boys out there, guys, in this video, I'm going to be telling you all how to make an ideal profile for the online dating websites and how to increase your chances to find a date. So, guys, here we have our tip number one. So guys, tip number one, it talks about good pictures of yours जो कि आप लोगों को अपनी प्रोफाइल में पोस्ट करनी होंगी. Right guys, so whenever we are meeting somebody, तो जो उनका appearance या फिर जो उनकी personality है, हम उस चीज से impress होते हैं. तो हमें यहाँ पे भी वही करना है. We just have to portray that we carry a very good personality so that वो सामने वाले के लिए अच्छी हो. And guys, I'm very much sure that आप लोगों में से कुछ लोग अभी ये कह रहे होंगे, अबे साले तू तो ब्लॉगर है, तेरे पास वो बथेरी पिक्चर्स होंगी, हम कहाँ से लेके आएंगे. So guys, please calm down. I'm sure कि आप लोगों के पास भी अच्छी पिक्चर्स होंगी. एंड मैं यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल पिक्चर्स की बात बिल्कुल नहीं करूंगा. I'll be talking about those pictures जो कि मैंने अपने स्मार्टफोन से क्लिक करी हैं and they are also good in quality and good enough to post on your online dating website. Now, what type of pictures we need to post? Guys, number one, you need to make sure that the picture is good and it is vibrant, right? And you need to make sure that your face is clearly visible in the picture. The other person has to know कि भाई वो किसको right swipe कर रहा है. So make sure जो आपका face है वो picture में clearly visible हो. You can post something like this. Moving on guys, we need to showcase that we carry a good personality. So the second picture, it has to be something which shows your full length of the body. Okay, and you have to be well dressed in that. आपको show करना है कि आपकी एक अच्छी personality है. तो किसी भी एक अच्छे outfit में picture post कीजिए जो कि it could be something like this or something like this. So you need to make sure that you show a good personality in that picture top to bottom and it will be even more beneficial for you अगर आपकी जो height है वो 5'9" and above है. एंड गाइस, अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई पिक्चर नहीं है तो प्लीज मायला ए राजू कूतरिया काहे रे बाबा, जल्दी आ रे, मेरे को बम्बल के लिए अपना फोटो क्लिक कराने का है, जल्दी आ रे बाबा. तो भाई प्लीज ये बिल्कुल भी मत करना. आगे और भी पिक्चर्स के बारे में बात करने वाला हूं, प्लीज उनको पहले सुन लो. सो गाइस, पॉइंट नंबर 2 इज रिगार्डिंग द सेल्फीज. प्लीज ट्राई टू अवॉइड सेल्फीज. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास बहुत सारी अच्छी पिक्चर्स नहीं है तो आप मैक्सिमम अपनी प्रोफाइल में एक सेल्फी इंक्लूड कर सकते हो. पूरी प्रोफाइल को सिर्फ सेल्फी से मत भर देना. रिमेंबर दैट यू हैव अ बॉडी अंडर योर फेस एंड यू हैव टू शो दैट एज वेल. ओके, सो गाइस, वन गुड सेल्फी व्हिच पोर्ट्रेज समथिंग इज गुड इनफ टू गो. लाइक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एंड आपने एक सेल्फी क्लिक करी है टू शो द बैकग्राउंड बिहाइंड यू इज गुड इनफ. यू कैन गो अहेड विद दैट. Alternatively, mirror selfies को जो है ज्यादा प्रेफरेंस दो ओवर नॉर्मल सेल्फीज. दे लुक मच मच बेटर. एंड अगर आप मिरर सेल्फी क्लिक कर रहे हो तो उसके अंदर प्लीज ट्राई टू कवर द फुल लेंथ ऑफ योर बॉडी. आप उसमें कोई आउटफिट दिखाइए, कोई अच्छा आउटफिट दिखाओ जिसमें आपकी पर्सनालिटी जो है वो शोकेस हो. ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ मिरर सेल्फी जो कि आपने जिम में क्लिक करी है. बट मेक श्योर नो शर्टलेस पिक्चर्स. दैट लुक्स वेरी वेरी क्रीपी. प्लीज डू नॉट पोस्ट एनीथिंग लाइक दिस. Also guys, if you are an athlete, then you can go for posting a picture with a jersey जिसमें आपका नाम printed है. I'm sure that she would like it for sure. Girls are very, girls are attracted to guys who are passionate about something. It could be sports, it could be anything. So guys, picture number 3 is regarding picture with a dog. I'm sure that we all are well aware of the fact that girls love dogs. So guys, if you are having a picture with a dog, then please go ahead, उसको use करो for your profile. बिल्कुल सही बात है बेटे. तेरे को देख के राइट स्वाइप करे ना करे, कुत्ते को देख के तो कर ही देंगे. अंकल जाओ ना यार आप. यस गाइस, सो आई वाज सेइंग अ पिक्चर विद अ डॉग. इसका मतलब भाई ये नहीं है कि सड़क के किनारे कुत्ते के साथ में कोई भी ऐसी वैसी पिक्चर क्लिक करा के तुमने पोस्ट कर दी. भाई कोई अच्छी पिक्चर पोस्ट करो, पोस्ट अ डिसेंट पिक्चर विद अ डॉग. ऑल्टरनेटिवली इफ यू हैव अ पेट डॉग, उसके साथ में कोई अच्छी सेल्फी क्लिक करके पोस्ट कर सकते हो, लाइक व्हेन यू आर किसिंग द डॉग और समथिंग, एंड दैट कुड बी द ओनली सेल्फी ऑफ योर प्रोफाइल, राइट? So guys, picture number 4 is your travel picture. I'm sure आप लोगों में से बहुत लोगों के पास में अपनी travel की कोई ना कोई picture अच्छी होगी. So you can go ahead with posting a picture which could be at the beach or at the hills, etc. You can post something like this or something like this. Guys, ये जो pictures हैं, these portray your interest. ये portray करती हैं कि आपको travel करना कितना पसंद है. And अगर सामने वाले को भी travel करना उतना ही पसंद हुआ, then you guys could be on the same page and she could swipe you right. Another thing guys, this is something very very important. Please make a note of this.
गाइस अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के जो चांसेस हैं टू गेट राइट स्वाइप वो इंक्रीज हों, तो सबसे पहले तो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक करो। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे चांसेस राइट स्वाइप होने के। राइट, ओके, दिस ब्रिंग्स मी टू माय टिप नंबर 2। So guys, tip number 2 is regarding your bio. Guys, trust me, this is something very, very important. After looking at your pictures, the next thing she'll be looking at is your bio. So guys, please make sure कि जो आपकी bio है वो बहुत interesting हो. Your bio should define आप कौन हो, who you are, what you like, what you do, etc. Like if I was to make a bio for myself, it would be something like this: lifestyle blogger model. So guys, this is something what I do and something which defines me. Moving on, wanderlusting but quarantining. So guys, wanderlusting, I like to travel, इससे मैंने डाला wanderlusting, something which I like to do, and quarantining is to add a bit of humor to it. So अगर आप अपनी बायो में अपना humor डाल सकते हो, then that is a great thing. Also guys, जो मैंने wanderlusting डाला है, it is to establish a link between जो पिक्चर्स मैंने डाली थी ट्रैवल वाली, सो उसके साथ में एक लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए मैंने wanderlusting डाला. सो इट इज ग्रेट इफ यू कुड एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द पिक्चर्स जो कि आप पोस्ट कर रहे हो एंड योर बायो. दैट इज अमेजिंग गाइस. मूविंग ऑन, आई ऑल्सो प्ले विद नंबर्स बट डोंट कीप अ काउंट ऑफ कप्स ऑफ कॉफी ओवर अ नाइस कॉन्वर्सेशन. सो गाइस, cups of coffee, मेरे को कॉफी पीना पसंद है, and if she also likes coffee, then we have something in common, and that could be the reason she could swipe me right. So that is how you can make a bio for yourself. Moving on, tip number 3. Tip number 3, this is regarding the conversation. Once you both have swiped each other right and it is a match, then guys, the next important thing is the conversation. So guys, if you're using Bumble, then she has to message you first, and that message could be as simple as a simple hi or hello. Alternatively, अगर आप Tinder यूज कर रहे हो तो Tinder पे she might message you, she might not message you. So it is you who has to take it forward from there. So guys, अब आप लोगों को क्या करना है, go through her bio. बायो में से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग निकालो जिसको आप पिक कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो. अगर लाइक लेट्स सपोज कि उसने अपनी बायो में मेंशन किया है अबाउट अ फेवरेट टीवी सीरीज, तो आप उस टीवी सीरीज के कैरेक्टर के बारे में उससे पूछो, लाइक व्हाट इज अ फेवरेट कैरेक्टर, या फिर उसका फेवरेट एपिसोड कौन सा था. ऑल्टरनेटिवली अगर उसने कोई अपनी ट्रैवलिंग की पिक्चर शेयर करी है, तो उस ट्रैवलिंग की पिक्चर में से पूछो उससे कि लाइक विच इज दिस प्लेस, हाउ वाज योर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस. दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द कॉन्वर्सेशन गाइस. If you guys want me to make a video on how to build a conversation or how to text her, then guys please comment down below and इस वीडियो को लेके जाओ to 250 likes and the number of subscribers to 250, and I'll come up with a video regarding the same. Come on guys, I know that you can do it. And guys, if everything goes well, please do not plan up a date before the lockdown gets over. लॉकडाउन एक बार ओवर हो जाए उसके बाद फिर आप मिल लेना. Till then, go out for a virtual date. Bumble has the feature of video calling. WhatsApp call, Google Duo, बहुत तरीके हैं. Go out for a virtual date, but do not plan a date unless and until the lockdown is over. So guys, this was it from the online dating video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी इसमें से कुछ टिप्स ले पाएं. Also guys, if there is anything specific जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज कमेंट डाउन बिलो. Also, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई क्या कर रहे हो, राइट स्वाइप के चांसेस कम हो जाएंगे तुम्हारे, जाके सब्सक्राइब करो पहले तो. सो गाइस, एंड आल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस, राइट. सो गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट इज नितिन गुप्ता. स्टे होम एंड स्टे सेफ.